Now, once you get the idea of correspondingness, idea okay, idea of correspondingness. Okay, once the idea of correspondingness is clear to you, then I hope that you have understood the previous video or the previous thing that was given. Now the fact is this, that in the previous section of the video, I have shown you very simply this one triangle, and I have shown you that this corresponds to this, means top corresponding to top, left corresponding to left, right corresponding to right, and once you get the corresponding angles, you will get the corresponding sides also, opposite side. This and this will be corresponding, this and this will be corresponding, lying opposite to this, and this will be corresponding. But however, always when you do mathematics, the corresponding angles and the corresponding sides will not appear to you in such a simplified manner. It may be like this, that it is one triangle is like this, the other triangle is like this, and it may be so that this angle is corresponding to this angle and this angle be corresponding to this angle and this angle be corresponding to this angle. The situation may be so. So you should not always stick your idea that উপরেরটার সাথে এটার সাথে আর এটার সাথেই করসপন্ডিং হবে, সেরকম কখনো হয় না। সেরকমও হয়, মানে আবার এরকমও হয়, করসপন্ডিংনেস এটা আর এটার সাথেও হতে পারে, এটা আর এটার সাথে হতে পারে, এটা আর এটার সাথে হতে পারে, এটা আর এটার সাথেও হতে পারে। ঠিক আছে, মানে সাপোজ ইট ইজ এ বি সি डी ई एफ, सपोज ऐसा पकड़ लो, तो क्या होता है कि एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ई. Okay, means just open your imagination. A can be corresponding to E and B can be corresponding to F and C can be corresponding to D. That may be the situation, and when that is the situation, which will be the corresponding sides? B के opposite में जो है AC will be corresponding to B के साथ equal कौन है? F, DE. ठीक है, एंड सी के ऑपोजिट में है जो ए बी, तो सी के साथ इक्वल कौन है? डी, तो उसके ऑपोजिट में कौन है? ई एफ, तो ई एफ. और ए के ऑपोजिट में कौन है? बी सी, लेकिन ए के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ई, तो डी एफ. तो ये हो गया साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप. ओके, जो एंगल के ऊपर निर्भर करेगा, या फिर एंगल का भी साइड के ऊपर निर्भर कर सकता है, लेकिन ऑपोजिट में होगा. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस.